हरे कृष्ण। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज जो है हम लोग कुछ मैथ्स के बारे में जानेंगे और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, जैसे रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूरे नंबर सिस्टम को देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें दोनों ही, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, रैशनल और इरेशनल, उनको पढ़ना है 9th और 10th के स्टूडेंट्स को। तो जिसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल हो, दे कैन गो थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट विल सी द नंबर सिस्टम में। तो दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल नंबर। रियल नंबर जो कि नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज द रियल नंबर्स। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। व्हाट इज दैट नेचुरल नंबर? तो ये सब लोगों को पता होगा, जो नंबर नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंट कर सके, दैट वी कैन डिनोट, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। तो अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से अगर हम बात पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। एंड अगर हम बोले कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सो द लार्जेस्ट natural number, that will be infinite, because there is no end of numbers. So the smallest natural number is 1 and the largest natural number is infinite. Then the second thing is the whole number. Now we'll talk about the whole number. So whole number is what? So we'll include 0 in natural number, that will become the whole number, like 0, 1, 2, 3, 4, etc. That will be till infinite. That will be what? That will be the whole number. So from here we can say the smallest whole number is what? Smallest whole number is 0, and the largest whole number, again, the largest whole number will be what? That will be infinite. So I believe everybody is clear about that, what is natural number and what is whole number. After natural number and whole number, we'll see the integers. What is integers? So here we'll see इंटीजर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं एंड विल वी स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें 0 के लेफ्ट साइड में, तो ये होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इस इन सब 0, इंक्लूडिंग 0 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, all together they are known as what? Integers. They are known as integers. So we'll talk about the smallest integer. Then it will be what? That is the infinite, because there is no beginning of the integers. कहाँ से integer शुरू हो रहा है, we don't know. And the largest integers again, तो largest integers का भी कोई हमें नहीं पता, तो that will be also infinite. और यहाँ पे अगर हम smallest की बात करें तो not defined भी हम लिख सकते हैं, that is not defined. Yes, so that is not defined. Okay, and so this is the integers. Okay, now negative integers, positive integers. So जो लेफ्ट साइड में है, 0 के जो लेफ्ट साइड में होगा, that is what? That is the negative integers. ये क्या कहलाएगा? Negative integers. Yes. और इसके जो राइट साइड में है, that is the positive integers. Positive integers. And 0, so 0 is the 0 integers.
zero integers. Yes. So we can say that zero integers, negative integer, positive integer, all together they are making integers. Okay. So this is the number system जो हम लोगों को पता करना था. इसके बाद हम देखेंगे अब रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर क्या होता है. तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो बोला जाता है कि P बाई क्यू के फॉर्म में हो. अगर P बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होगा, तो जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा. तो अगर हम बात करें 1, 2, 3 या फिर 4/5, 1/2, 3/2, so these are what? These are the rational number. Yes, it can be positive also, it can be negative also. It should be in the form of what? It should be in the form of P by Q, and the Q should not be zero, then it will be known as rational number. तो अब क्वेश्चन है, अगर कोई पूछे कि जीरो जीरो क्या है, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो यस, जीरो इज ऑल्सो द रैशनल नंबर, क्योंकि हम 0/1 कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रैशनल नंबर. So this is the definition of what is that रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर में भी हम कुछ और चीजों को देखेंगे कि क्या होता है. तो सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि क्यू हमारा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. दैट विल बी द रैशनल नंबर. ओके, नाउ सपोज देर आर सम रैशनल नंबर गिवन, like here given 3/5 and 5/7, and you will be asked that which is the greater. What will we do? We doing. So what we have to do, if in that case where the denominator is different, and we have to see if the denominator is same, if the denominator is same, अगर सेम है डिनोमिनेटर, तो जिसका न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है, न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो रैशनल नंबर बड़ा होगा. जैसे कि अगर हम बात करें 1/2, 3/2, 4/2 या फिर 5/2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा. तो सबसे बड़ा 5/2 होगा, देन 4/2, देन like this it will be. But if the denominator is different, what we will do? So we have to make the denominator equal. So for that, what we have to do? We have to take out the LCM of the denominator. So here the denominator is 5 and 7. So we'll take out the LCM of 5 and 7. So that will be 35. Now we have to take the number 3/5 and we have to make it, like in the denominator we have to make 35. So we'll multiply with 7. So we'll multiply 7 like numerator also and denominator. So the value will not be changed. So it will be 21/35. Then the second number we are taking, that is 5/7. Here also we have to make 35. So we'll multiply by 5, numerator and denominator both. So it will be 25/35. Now we have 21/35 and 25/35. As I told that if the denominator is same, so whose numerator is greater, the number will be greater. So here 25/35 will be greater. So we can say 25 is 5/7 and 25/35 is 5/7 and 21/35 is 3/5. So here in 3/5 and 5/7 में 5/7 क्या है? Greater है. So by that way we can calculate that if the denominator is not same, so how to calculate?
how to find out the which that rational number is greater or smaller, we can say that. Now we'll see some properties of rational number. So properties को हम लोग देख ले थोड़ा सा. प्रॉपर्टीज, यस, प्रॉपर्टीज में है कि अगर दो रैशनल नंबर का सम है, सबसे पहला सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यस, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, यस, दैट विल बी इक्वल टू रैशनल नंबर ओनली. अगर दो रैशनल नंबर है तो उसका सम भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा. देन वी कैन से द डिफरेंस आल्सो, difference of two rational number, yes, difference of two rational numbers, that will be also what, that rational numbers, that will be equal to rational number only, yes, rational number only. Then if a and b are any two rational numbers, then each a minus b and b minus b is also the rational number. अगर दो रैशनल नंबर हमारे पास a है और b है, तो इन दैट केस a माइनस बी भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, यस, रैशनल नंबर होगा. और b माइनस ए भी क्या होगा, ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा. जैसे कि अगर हम ले लेते हैं a माइनस बी की बात कर लेते हैं, तो अगर 5 और 4 ले लेते हैं, तो 5 minus 4 that is 1, that is what, that is the rational number. 1 by 1 we can do, and 4 minus 5 that is minus 1, so that also minus 1 by 1, that is also what, that is also the rational number. So the sum of the two rational numbers are always rational number, differences of two rational numbers also the rational number. Now we'll see the product. So product of, yes, product of two rational numbers, that will be also what, rational numbers, that will be also rational number, yes. Like suppose a is a rational number, so a into b, like ab, or b into a, that will be also ba. The both is what, that is the rational number. How? So we'll see that again 4 and 5. So 4 into 5 is equal to 20. That is 20 by 1, and this is also rational number. And 5 into 4, that is also 20 by 1. So that is also what? A rational number. I hope everybody is understanding. So product of rational number is also a rational number, and like that the division of a rational number by a non-zero rational number is also what? A rational number. So we can see the sum, differences, product and the division all are rational number. Now we'll see the decimal representation of rational number, that is the decimal representation. Decimal representation of रैशनल नंबर अगर हम बात करें, लाइक जैसे 1/8 है, सो 1/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, सो वी हैव 0.125, यस. उसी तरह से 1/25 है, so that is 0.04, yes. So this is what, these are the, इसको भी हम अगर कैटेगराइज करें डेसिमल वाले को, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है 25, 1/25 दैट इज 0.04, और ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, कुछ पॉइंट्स के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसका रिमाइंडर, तो दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. बट इफ वी आर टेकिंग 3/7, so 3/7 that will be 0.428571 and that is being repeated. ये हमेशा रिपीट करेगा, तो इस तरह के डेसिमल को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग decimal. So here we can see the
numbers are being repeated. Like one more number I am taking 4 by 9 and that will be 0.444 and so on. So 4 will be repeated again and again and again and there is no end of that 4. Like that 11 by 30. So we can that 0.36666 and so on. So there will be no end of 6 and it will be repeated again and again and again. So that is called non-terminating decimal number. Okay. अब like यहाँ पे ये जो हो रहा है ये 666 they are repeating, so it is the repeating non terminating decimal number. बट कुछ नंबर्स जो होंगे जिसमें ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा तो इसको नॉन रिपीटेटिव, लाइक विल सी 13 by 14 we are 13 by 44 we are taking, so 0.295454 यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये रिपीट करते जा रहा है. यस, सो यहाँ पे 54 is repeated again and again and again. So this is also what that we can say that a periodic or circulating decimal, because ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो दिस इज ऑल्सो नॉन repeating a non-terminating decimal, but here the number is recurring, or we can say the number is circulating, so that will be known as the non-terminating, circulating or periodic decimal. Okay, अब हमें ये पता करना हो कि कोई भी नंबर बिना किसी कैलकुलेशन के कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, so how we will come to know. So for that we have to see the question, like suppose we have the number 17 by 50. So what we have to see, we have to see the denominator. अगर ये डिनोमिनेटर जो है इस डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन करें, इसको अगर प्राइम फैक्टर में लेके चलें और इसके जो फैक्टर्स 2, 5 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 में आते हैं तो नंबर डेफिनेटली क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. अगर अदर देन 2 और 5 कोई और नंबर आता है तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. तो इसको हम करके देखें तो 50 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको 2 से करेंगे दैट 25, देन 5 से करेंगे. सो यहाँ पे 50 अगर है तो हम इसको लिख रहे हैं 2 × 5 × 5. तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी 17 by 50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन एक लेके देखें एंड दैट विल बी 7 by 8. So here again we are taking 8, so 2 into 2 into 2, so that is what 2 into 2 into 2. So it is also the factor is 2 into 2 into 2. ये भी क्या होगा, ये 2 के फॉर्म में है. तो अगर हम लिख सकते हैं कि ये 5 का पावर 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, तो ये जो 7 by 8 हमारा आ रहा है ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 23 by 72. यहाँ पे हम 72 को फैक्टराइज करेंगे, सो दैट विल बी 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 to the 4 to the 8, that is okay. So 72 is equal to 2 to the power 3 multiply 3 to the power 2. और इस केस में ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. So by seeing only you can say, or you are aware of that the rational number whatever is given that is terminating है or non terminating. Like we can see here 13 by 85. So we can see, we will take out, like we will factorize the 85 and then we will come to know that it is terminating or non terminating. So इस तरह का क्वेश्चन जो होगा हम देख के ही बता सकते हैं कि वो डेसिमल वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. तब तक के लिए